I will give you a copy of this folder, right? This data, is it correct? And I will give you a copy of this data. टैली करके मैं तुम्हें एक एग्जीक्यूटेबल का भी दे दूंगा ये. So you have to basically unzip it, and as soon as you unzip it, you come down to this particular folder and run this executable. Is this clear? When you open this folder and run this executable, then you'll come here, you click on select company, and then you place shift tab. याद रखो नोटपैड पे shift plus tab. Now what you can do is you can choose your company. So you go here, you go to here, you go here, then click this path, security, and what you do here is you type E:\tally. मजा आया कि नहीं आया? And you pick up whichever company you want. Is it clear? Yes or no? Then you adjust the date. I'm going to be giving you the data. Then I configure it and I go to product features and I go to manage local TDL, and then I go E:, wherever your TDL has been stored, TCP has been stored. Prime developer. Just 1 second. Then I go here, properties, not required, say 10 days, 8-9 है ना, 15 days, okay. E:, ये टीसीपी मैं तुम्हें दूंगा. Okay, so zero 08 09 to 23/09/2022. 7.
Now my tally TCP is being made. So this is valid up till 23rd, right? And this does not require any authorization. Now I go here in tally. I go down to this path. Then I click this. I click on properties. I click on security. Then I click this. Then I go here, Control Alt V, enter, enter, enter. ये समझ में आया बेटा कि नहीं आया? Yes, sir. Then I come here and I extract companies. So now for this time period, this whole data is coming out in SQL and sample company. From there on, you can run the procedure. Yes or no? Yes, sir. Okay. So what you need to do is, how to deploy this is, you go down to SSMS. And to make a testing easier, what I'll do is, I'll also add another company. So I'll give you 2 companies. Because multiple companies में problem आ सकती है ना? Right? And then this is between this dates. Then I extract this data. See, I got stuck. Why does it take so much of time? So here you have extracted in JSON format. Right. After this, what I will do is, I will take your script and let's test it out.
ये क्या हो रहा है? Control A, Control C, Control N, Control V. New database. But I need to be able to handle multiple databases ना, क्योंकि ये नाम वही देना पड़ेगा तुम्हें. SQL _6 मान रख किया ना मैंने. ये क्या? Now when you migrate, your name has to be the same. नहीं तो तुम्हें लंबा टाइम लगेगा डिप्लॉयमेंट में. Done? Yes or no? Now, are you listening, beta? Yes, sir. Now go to procedures. I go to stored procedures. Then I go down here. Execute. But this name which you have put is going to be, तुमने कौन सा JSON to SQL _4 किया है? Okay, so I'll go about a bit slowly on this. Let it load. सर आप अपना लैपटॉप से टेम्प फाइल और कैच फाइल डिलीट कर दीजिए तो थोड़ा फास्ट हो सकता है. वो मेरे को थोड़ा बताना बेटा कि मैंने कौन सी कोई टेम्प फाइल वगैरह का कुछ गड़बड़ हो गई है. तो ये आया ना. So this procedure is working fine. Correct? Yes, sir. Now in your case what happens is, so what you are saying is that JSON to SQL 4
2 कर देते हैं, राइट? और फिर इसका नाम कर देंगे जेसन टू सीक्वल 4. इज इट करेक्ट? ओके ओके सर. करेक्ट, यही है ना तुम्हारा? अब इस पे आओ. यही नाम है ना बेटा? हाँ हाँ. वो सही कह रही थी उस दिन लड़की. The guy lady was saying it correctly, that she was saying कि you need to have parameters. There has to be some parameter to rename it. Rename favorite. Why is it failing? Because this is going to be backed up by this. So if I transform this data, if I look at this, and it's ODBC. ज्योति तुमने किया क्या? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है. ये तो तुम्हारा वहां से आ रहा है ना. दिस इज कमिंग फ्रॉम टैली डायरेक्टली. सर सर्वर नेम तो चेंज कीजिए ना, क्योंकि ये तो मेरा सर्वर नेम है. नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि तुम्हें क्लियर है कि नहीं. ये तो तुम्हारा टैली से आ रहा है ना डायरेक्टली.
चीज़ करेक्ट, कहीं पैरामीटर होना चाहिए यार इसमें। अब आ गया। दीप्ति तुम्हें पता था कि ये ओडीबीसी तुम्हारा डायरेक्टली वहां से आ रहा है, टैली से आ रहा है? सीक्वल से आ रहा है मेरा, टैली से तो पता नहीं। ये दिस इज कमिंग फ्रॉम टैली डायरेक्टली। डिड यू नो इट? नो सर। इसीलिए सर मेरा लेजर व्यू ओपन नहीं होता है, ये एक्सिस मांग रहा था। But you'll have to make the entire thing again. Why didn't you tell me that this is coming directly from Tally? सर मैं जब ओडीबीसी लेजर व्यू ओपन करता हूँ तो ओडीबीसी ड्राइव ओ बाबा, तुम्हारा ओडीबीसी लेजर व्यू इज दिस लेजर व्यू ना? ये ओपन नहीं हो रहा मेरा। कौन सा ओपन नहीं हो रहा? ये वाले मैं आपको भेज रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा तुम्हारा क्या है, तुम क्या बनाते हो मुझको नहीं आ रहा। तुम्हारा ये जो लेजर व्यू है, दिस इज द लेजर व्यू विच इज कमिंग, दिस इज कमिंग फ्रॉम वेयर? सर मैंने भेजा, देखिए। मुझे पता नहीं तुमने क्या बनाया, आई एम एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड। वो तो होगा नहीं ना, बिकॉज लेजर व्यू है। तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है? व्हाट वाज द पर्पस ऑफ नॉट टेलिंग मी ना, बिकॉज दिस इज गोइंग विद टैली। You have made everything on this, so you'll have to remake everything. मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम क्या, आई डोंट नो व्हाट यू आर ट्राइंग टू दिस थिंग। तुम्हें ये है ओडीबीसी लेजर, व्हाई डिडंट यू टेल मी दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम लाइक दिस ना? I would have told you, look how to rectify it. Do you understand what has happened? You're getting it directly from Tally. Yes sir. इसीलिए मैं पूरा डॉलर कहाँ से आ रहा है? अजीब आदमी है यार तुम। बता, I don't know what were you waiting for. Isn't it common sense? Because you have to remake the entire thing again. You make it up, beta. I need that because they're asking for delivery now, yaar. I have to deliver the project. सर मुझे पता नहीं था ये टैली से आना चाहिए। But if it is not refreshing from your, isn't it common sense that if it's not refreshing, there's something wrong? Because it has to come from your database. I've given you the database script. What is the purpose of telling me now? It's common sense, right?
But you told me it picked up all the ODBCs from ledger view. I'm still a bit confused. This table समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है. Have you imported this table? Yes, sir. पता नहीं तो जो थी क्या. And you have made everything over this. I can't. I'm correcting it, Dipjyoti, but you'll have to figure it out, beta, because I don't have the energy now. ये क्या बात हुई? मतलब आपको मैंने क्लियरली बोला कि आप वो SQL सर्वर वाले पे सारा बनाओ. मेरा क्या पर्पस हुआ यार अब इतना सब कराने का? अमित तुम निकल गई यार. मैंने तो सारे सीक्वल पे ही बनाया है पहले. कैसे सीक्वल पे बनाया? तुमने इसके ऊपर वाला बनाया है ना. ये लेजर व्यू किससे आ रहा है? आपने जैसे स्टेप बाय स्टेप बोला है वैसे मैंने फॉलो अरे किया. बेटा समझो ना, ये लेजर व्यू किससे आ रहा है? लेजर व्यू इससे आ रहा है कि उससे आ रहा है? लेजर व्यू ओडीबीसी से आ रहा है कि डेटाबेस से आ रहा है? क्योंकि बैठ जाएगा ओडीबीसी में तो ये सिस्टम. ये तुमने ओडीबीसी वाले से बनाया सारा. जबकि तुम्हें इधर इससे बनाना था, क्योंकि ये डेटाबेस वाला है. तो समझ आया बेटा मैंने क्या क्या कहा? हाँ. ये ओडीबीसी वाला है. ये ओडीबीसी टैली से डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट करा है. ये मैंने तुम्हें सिखाने के लिए किया था. आई टोल्ड यू वी कैन लर्न फ्रॉम दिस. दिस इज वाई तुम्हें बोलूं कि डॉलर कैसे आ रहा है इसमें, क्योंकि डॉलर नहीं आना चाहिए. सबके में किसी के में डॉलर नहीं आ रहा है. ये वाला है लेजर व्यू, ओडीएस लेजर व्यू. इससे सब बनेगा. अब तुम्हें बेटा क्या करना पड़ेगा? आई जस्ट टेल यू वंस अगेन एवरीथिंग वंस अगेन एंड डू इट सिस्टमैटिकली.
ये जो तुम्हारा ये है तुम्हारा जो डेटाबेस से आ रहा है, विच हैज टू बी, दिस इज कमिंग फ्रॉम ओडीबीसी। इस पे कुछ बनाना ही नहीं था, इसको डिलीट करना है। यहाँ पे ओके बैठ सर। करके इसके सारे ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, एंड देन यू हैव टू रीमेक ऑल दैट ग्राफ्स एंड डैशबोर्ड। चलो हो गया दिव्यज्योति, इट्स अ लर्निंग, वी हैव लर्नड इट, राइट? सो आई हैव चेक्ड इट अप अगेन, सो आई हैव क्रॉस चेक्ड इट अप अगेन, सर राइट? मैंने आपको दिखाया था, आपने भी कुछ नहीं बोला बेटा, नहीं, तो मैं नहीं, दैट्स व्हाट आई वाज आस्किंग। नो, बट यू कुड हैव टोल्ड मी कि सर ये रिफ्रेश नहीं हो रहा है ना। सपोज सी द चेक पॉइंट इज दिस, आई मीन दिस थिंग इज देयर, दैट if it is not refreshing, if it's not connecting to database, you have to tell me कि सर मेरा नहीं कनेक्ट हो रहा। I would have told you कि बस ये ODBC से है, इसको मत करो, दूसरा वाला लो। If it is not refreshing, why are you making an object over it, ना? ये सर मैं 1 आवर में कंप्लीट कर देता हूँ। No, you don't need to panic. Mistakes happen in the first project, but what my request to everybody is that please apply common sense. दिमाग लगाओ थोड़ा सा। If this is not getting refreshed, so this is ODBC, Tally ODBC. If you are not able to refresh it, just stop, because you're not able to connect to database. Because I have given you SQL Server database. Not a big deal, because now you're still, I mean, mistakes happen all the time. People do it. So now what you need to do is, सर मैं पहले उसको रेप्लिकेट करता हूँ, फिर मैं हाँ, आपसे because let connect me करता at हूँ। least check what have you, this thing is there. Because ये होना चाहिए ना ये, because I'm trying to figure out, because I want to check all the dashboards. And I'm showing it how to do it. No, but yeah, there's a valid point. I should have a parameter for this. This I agree. This is also my issue with this game. If I have got 10, right? So अगर 10 का है तो ये, because I'll be able to filter it by the company. So this is fine. This is fine. So this you do it. This you do it. This you remove. So I'm not removing it right now because you have to replicate all the objects from there. Right? Okay, sir. So I'm not removing it, but once you replicate it, then remove this so that there is no confusion. Because it also skipped my mind that look, this and so it happens. It's happened. Okay, fine. Then I go to voucher ledger bill details. Perfectly fine. जय जय से हनुमान बार में 6. So this is the same step which you will have to do it there onto their database, because he would have, this thing is there, right? It happens, not a big ball game. People, when the first job, they always make mistakes. It happens. Not a problem. Yeah. No, my only thing was you could have given me a howl out कि सर मेरा कनेक्ट ही नहीं हो रहा है. I would have told you नहीं बेटा ये तुम्हारा वहाँ से हो रहा है. And I was kept on asking कि जब ज्योति चलो अब you're doing it the third time, the definition of measures. जय सिया राम, जय सिया राम, भज प्यारे तुम. ये बड़ा देखा तुमने? आई एम डूइंग द एंटायर थिंग अगेन, बट एक्चुअली द फन इज गॉन बिकॉज आई वुड हैव लाइक टू रिफ्रेश द डैशबोर्ड. So you have to do this thing and entire thing again.
right? Because the remaining things we have, I think, taken care of. Actually, I like it a lot more with database than with JSON. Jai Siya Ram, Jai Siya Ram. Bhajan. Isana Mahan. Beta, आपको ना you'll have to change it because because the client is asking for the delivery, so you'll have to help me out with this. मैं Right, you'll कर have दे to रहा help हूँ. me out with this. The ODS, ODB underscore ledger view, whatever are the objects, you remake it and you'll have to remake all the dashboards also. This is this thing. I mean, it can be done pretty quickly. So just do it within an hour or two, and I have to, and then start getting on to make the final this thing. Right. So I'm just giving it to you. I'm just checking up here that whether this thing works. Well, there should not be a problem. So I'm just checking whether it connects with the database. Are you understanding from where I'm coming? Whether the Yes, sir. migration happens for each one of them. But this you'll have to help me out with this. There must be some way of taking in a parameter. So I think we'll do it in the Power Query once this comes out. Not a problem. Jai Siya Ram. Now this is coming from the JSON, right? Okay. So this you remove, and after doing it, this you remove. These range parameters, start date and end date, we have discussed it before. So your other things are working fine. So now this ODBC, now what your next step you need to do is whatever the measures and the columns which are defined in ODBC ledger view, put them in this one. Is it clear? We'll rename it later Yes, on. sir. And once that is done, you'll have to remake all the dashboards, which I think should not take you much time. And then I think we might be okay. See this? There's an error. That is why you're having this problem. Because you didn't even have the complete set of fields. Okay, I'm just now giving you this file. Okay, whatever has happened. Don't worry about it. सब कुछ होता है ना? So now I'll give you this file and now correct it. ठीक है बेटा? जय सिया राम के जय सिया राम जय सिया Oh shit.
कैसे करेंगे, इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना, ये पूरा पूरा हिल गया है। चलो बेटा इसमें आप डिफाइन करो एंड देन सी। But this has to be, but I can't delete this one ODBC. Just 1 second. 1 second. This was the problem. Not a big deal. होता है जीवन के so beta, that is why I have to, that this is what happens. सर मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं हो गया खत्म हो गया यार, अब कोई बड़ी बात थोड़ी है, तो आप खून थोड़ी कर देंगे ऐसा तो no. Now what I've done is I've enabled ODBC, so now let's see whether this refresh happens. It's happened, don't worry. एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ हुआ था सर, आप जेसन फाइल में लेजर व्यू था ना, और it's happened. I don't get into past very much. So now we need to check where it is happening. Refresh preview. सर इसको मैं नया फाइल में क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने तो देख लिया होगा ना। I'm trying to reduce your time. अच्छा ओके, let me just do it. सर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सर। मैं अभी दे रहा हूँ आपको जो भी फाइल है ना, just see it. So this is the benefit of actually doing internal projects, because here you have slight leverage. बाहर बहुत मुश्किल हो जाता है ये केस। बाहर जो है ना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। On a real client end they will not be so considerate. चलो ओके।